Similarly, you can say stress is the part and parcel of the job. है ना? Hello ladies and gentlemen, my name is Megha and you are watching English with Megha. Yes. So in this video we are going to learn 5 advanced English phrases. So basically we are going to learn what is the meaning of these phrases and in which context we can use them. Also we will see some example sentences. So without wasting time, let's dive into the first phrase and that is easier said than done. Okay? हिंदी में अगर बोलें तो होगा कहना आसान है, करना मुश्किल है. Sometimes it's easy to give lectures, it's easy to give suggestions or talk about things, but when it comes to implement or execute or to practice, mostly we fail. So here we can bring this phrase to define it. Easier said than done. Any task that is easier to talk about than put into the practice. Alright? For example, people usually say, stay positive in tough time. Do not overthink. Immerse yourself in some productive, positive work. Okay? So it's easy to say, it's easy to give suggestions, but when you are facing a problem called depression, all I have to say is easier said than done. Finding a good job of your interest is easier said than done. So ये बोलना है कि आपको जो काम करना पसंद है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वही जॉब करो, उस तरीके का जॉब ढूंढो. ये कहना आसान है पर करना मुश्किल. So I think now you have got what is the meaning of this phrase and how and where you can utilize it. So now let's talk about the second phrase, all in all. But before we understand this phrase, my sponsor has a beneficial message for you. So let's see what it is. Are you looking to study or work abroad but having a tough time preparing for a perfect score in IELTS or struggling with time management? Don't worry, you can enroll yourself in an academy for IELTS preparation, and the best thing is that you can use my code MEGHA10 to get 10% off. Yes. Also, you can take IELTS reading reality test and assess your band level. This is the only test you need to improve your IELTS reading, and here you will get exam level test, instant results, online timed mock test and many more things. This is one of the largest test series catering to the IELTS reading section. The test series has one weekly test for the reading section of academic IELTS and general training IELTS. For more information, you can check the link which is given below in the description box, and don't forget to use the code MEGHA10 to get 10% off. Come back to the lesson and we were talking about the second phrase, all in all. ओके तो इसका हिंदी में मतलब होता है सब मिला के, कुल मिला के. जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, कुल मिला के सब कुछ अच्छा रहा. ऑल इन ऑल इट्स बीन अ गुड ईयर. कुल मिला के ये साल अच्छा रहा. So this phrase is typically used when someone is considering all aspects of something together. ठीक है, तो किसी चीज़ के बारे में आप सब चीज़ को सुनते हैं, देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल उसके प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, आगे पीछे ऊपर नीचे, और फाइनली आप कुछ कंक्लूड करते हैं, कुछ कंक्लूजन में बोलते हैं, तब उस समय इस फ्रेज को आप यूज़ करते हैं, ऑल इन ऑल. ऑलराइट, लेट्स सी वन सिचुएशन वेयर वी कैन अप्लाई दिस फ्रेज. सो एज वी लेफ्ट द हाउस इट स्टार्टेड रेनिंग. ठीक है, बारिश होने लगी. देन आवर कार ब्रोक डाउन. हमारी कार खराब हो गई उसके बाद. एंड आफ्टर दैट वी नैरोली सर्वाइव द एक्सीडेंट. उसके बाद हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा. सो ऑल इन ऑल द ट्रिप वॉज नॉट गुड एट ऑल. सो कुल मिला के ये जो ट्रिप था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. ठीक है, कुल मिला के मतलब आपने जो भी हादसे हुए, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई, उसको आपने कंसीडर किया और आप एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं, तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं ऑल इन ऑल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड फ्रेज, ऑन द वर्ज ऑफ समथिंग. और ये समथिंग कुछ भी हो सकता है, राइट. सो इसका हिंदी में मतलब है के कगार पर. वर्ज का मतलब होता है सीमा या फिर किनारा. ठीक है, तो जब आप किसी चीज़ के कगार पे, मोस्टली हिंदी में बहुत अच्छे से हम इसको समझते हैं, तो वी कैन डिफाइन इट टू से close to doing or experiencing something.
either you can say at the point when something is about to happen. For example, she was on the verge of breakdown when she came to know about her disease. I was on the verge of death when that accident occurred. Either you can say when that accident happened. मैं मौत के कगार पे था जब वो एक्सीडेंट हुआ. Similarly, you can say the building was on the verge of collapse. Collapse का मतलब होता है गिर जाना, ढह जाना. ठीक है, तो जो बिल्डिंग है वो ढहने के कगार पे है, गिरने वाला ही है. फोर्थ फ्रेज है पार्ट एंड पार्शल. पार्ट एंड पार्शल इसका मतलब होता है किसी चीज का जरूरी हिस्सा होना. ठीक है, सो वी कैन डिफाइन इट टू से बी एन एसेंशियल पार्ट, element of feature. Either you can say integral component of anything. All right, for example, pain and pleasure are the part and parcel of life. मतलब pain दर्द, pleasure खुशी आनंद, ये चीज़ें जो हैं वो पार्ट एंड पार्शल हैं लाइफ के, मतलब इंटीग्रल कंपोनेंट. लाइफ है तो पेन भी है, प्लेजर भी है, खुशी भी है और गम भी है. राइट, तो आप इन चीज़ों को लाइफ से सेपरेट नहीं कर सकते. तो दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड पार्ट एंड पार्शल. सिमिलरली यू कैन से स्ट्रेस इज़ द पार्ट एंड पार्शल ऑफ द जॉब. स्ट्रेस जो तनाव है वो जॉब का एक अभिन्न हिस्सा है. मतलब जॉब है वहाँ पे स्ट्रेस भी है ना. And lastly, we have an interesting phrase used for one's own ends. थोड़ा टफ है, समझ में नहीं आ रहा है. तो हिंदी में इसका मतलब है जब आप किसी को यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने एडवांटेज, मतलब अपने काम के लिए किसी और को जब यूज़ करते हैं तब you can bring this phrase. So you can define it to say when you use someone for your own benefit or when you manipulate people for your own advantage or when you exploit others to have your own benefits, to have your own advantages or to have your own gains. So at that time you can bring this phrase used for one's own ends. याद रहेगा ना? Let's see some examples. So one should not play with the emotions of others for one's own ends. Politicians disturb the harmony of the society for their own ends. जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए समाज की सौहार्दता को बिगाड़ देते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं. So this is all for today's lesson and I want you to frame few sentences using these phrases and write down below in the comment section. I'll wait to read your sentences. And also make sure that you will not forget to use these phrases during your conversation. Okay? On this note, I would like to say tata bye bye. But जाने से पहले वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा. अगर आप चैनल पे नए हैं so please do subscribe and share. I'll meet you in next video. Till then, bye bye.